Hi friends, a very good evening to all of you. Guys, I hope मेरा कनेक्शन सही आ रहा है, ऑडियो वीडियो सही से दिखाई दे रहा है और स्क्रीन भी आपको प्रॉपरली दिखाई दे रही है। Guys, I hope मेरा कनेक्शन सही आ रहा है। ठीक है, तो अभी कुछ दिनों तक ऑडियो क्वालिटी खराब रहेगा क्योंकि मेरे पास लैपटॉप भी नहीं अच्छे वाला और क्या कहते हैं मेरा खुद का माइक भी डाउन है। ठीक है, तो एक दो दिन की बात है। कल तो एक्चुअल में वाइफ को टाइम लेना है, कल करवा चौथ है। तो कल मैं लैपटॉप ठीक कराने नहीं जा सकता, हालांकि मैं इतना बिजी नहीं हूँ। बट ना कल करना एक्चुअली दो चीज़ें हैं, एक तो वाइफ को भी टाइम देना है थोड़ा सा और दूसरा अपग्रेड के साथ कुछ काम शुरू करना था। तो वो भी मैं क्योंकि दो तीन दिन से बिजी था तो वो भी काम शुरू नहीं हो पाया। तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट 5-6 डेज मैं उस पर भी ध्यान दूँ। तो कल परसों तो मैं शायद लैपटॉप ठीक कराने नहीं जाऊँगा, बट मैं सैटरडे को जाऊँगा। और जहाँ तक मुझे पता है वो लोग यही बोलेंगे कि अभी हफ्ते का टाइम और चाहिए क्योंकि वो जीपीयू मंगाएंगे। तो हरिवीर सर है ना बाईजूस वाले, वो बगल में ही रहते हैं, मेरे दोस्त हैं वो। तो मैं उनसे पूछता हूँ अगर उनके पास माइक हो, क्योंकि उनकी डेली क्लासेस होती हैं, वो अभी एक्चुअली बाहर ही बैठे हैं, मेरे पास ही बैठे हुए हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ अगर उनके पास एक्स्ट्रा माइक होगा तो उनका माइक हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो आज क्या करना है, आज हम लोगों को हीट ट्रांसफर का सेकंड वीडियो कंसिडर करना है ना, सेकंड वीडियो देखना है। तो आप लोग जो है अपने नोट्स में लिख सकते हो हीट ट्रांसफर लेक्चर नंबर 2। एंड ये क्या चेक कर है, मेरे अच्छा अच्छा ओके ओके, तो मेरा पेन काम कर रहा है, पेन काम कर रहा है, मैं घबरा गया तभी पेन ही नहीं चल रहा है क्या। तो पेन इज वर्किंग, 1 मिनट होल्ड करो, जस्ट पेन की सेटिंग में चेंज कर देता हूँ और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल थोड़ा सा बीमार था तो कोई टेक्निकल न्यूज़ वगैरह नहीं देखी। बस इतना ही देखा था कि जो बोइंग है, so Boeing is going to offer a 136 kilonewton thrust engine to our HAL for their upcoming plane। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ देखी थी मगर इसको भी मैंने कोई एक्सप्लोर नहीं किया। तो कल मैंने सच्ची बताऊं कुछ भी टीवी शीवी नहीं देखा, बस एज शेल्डन वो देखता रहा बिग बैंग थ्योरी और सो गया था, मैं टाइम पर सो गया था। तो आज मैं देखूंगा कोई न्यूज़ होगी तो आपको कल बताऊंगा, बट अभी हम लोग काम चालू करते हैं। तो ये आपका हीट ट्रांसफर का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी थी। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या थी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज थर्मल एनर्जी, व्हाट इज टेम्परेचर, एंड देन अल्टीमेटली द डेफिनेशन ऑफ हीट। So till yesterday, this is what we have done, right? So you guys told me that sir, suppose there is a point of high temperature in space, a point of low temperature in space. So these 2 points they have a temperature difference. So this is the law of nature. If between 2 points there is a difference of intensive property, then there will be some sort of flow between the points. आपके पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच में प्रॉपर्टी डिफरेंस है। कौन सी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, प्रेशर, टेम्परेचर, और इंस्टेड ऑफ प्रेशर एनर्जी हेड बेटा करना। तो वेन एवर देर इज अ डिफरेंस ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी बिटवीन 2 पॉइंट, उन 2 पॉइंट्स के बीच में फ्लो आएगा। So in this particular case, there will be a flow of thermal energy, and that moving thermal energy we call as heat. तो ये कल हमने डेफिनेशन देखी थी हीट की। अब मैंने बोला था कि द हीट, द टर्म हीट we start learning in the subject of thermodynamics. So suppose there is a cup of tea and initially the tea is hot. After some time, the tea will achieve the temperature of the room. The tea will come in equilibrium with the room. So MC delta T will tell us how much heat is lost by the tea. So through the laws of thermodynamics, we are able to calculate the amount of heat transfer. But then why there is an additional subject? What is the need of doing an additional subject? What extra we are going to learn in this new subject? What are the objectives of any question of this subject? ये चीज है, इस सब्जेक्ट में किसी भी क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हो। तो मैं देख सकता हूँ 2 स्टूडेंट्स लाइव हैं। तो कौन कौन है, आई थिंक मानुष और चित्र
मानस, चितरंजन, ऋषि, बेटा एनी वन ऑफ यू? कौन है लाइव? कौन कौन लाइव है? एक बार यस नो कर दो ताकि मुझे पता लग जाए कौन कौन लाइव है। अरे कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है यार। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो आई थिंक मानस और चितरंजन नहीं है, समवन एल्स इज देयर। अच्छा मानस इज देयर, ठीक है। हाँ तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे? हमारा क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? शायद आपने कॉलेज में हीट ट्रांसफर पढ़ा होगा, यू माइट हैव लर्नड इट ओवर देयर, so you might know what will be the objective of this subject. Anyone? Anyone? बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। देखो, whenever we study a process, definitely the amount of heat is important in calculation. But many times, in fact, most of the time, the time period of heat transfer is also important. मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी कोई हीट ट्रांसफर प्रोसेस होता है तो टोटल हीट ट्रांसफर इंपॉर्टेंट है, मगर टाइम पीरियड ऑफ प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है। हाय चंदर, हाउ आर यू? तो चंदर, चंदर बेटा, तो ये वाला जो क्लास है ना हीट ट्रांसफर का, बेटा ये गेट और ईएससी ओरिएंटेड है, और जो असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर क्लास है वो सुबह चल रहा है बेटा। तो आज सुबह मैंने फ्लो थ्रू पाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए थे, और डे आफ्टर टुमारो मैं टर्बो मशीन भी स्टार्ट कर रहा हूँ बेटे, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या बोला? टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। जैसे से फॉर एग्जांपल, दिस एग्जांपल आई टेक इन एवरी क्लास, इन एवरी बैच, बिकॉज इट्स अ इजी एग्जांपल। So say for example, we have a thermos flask, okay? We have a thermos flask like this. So this is the flask, and I will pour some tea in the flask. So I have just made tea. I have poured the tea in the flask, and initially the flask is at a temperature of 80 degrees Celsius. Then I will close the lid of the flask and keep the flask in the office, so that whosoever wants tea, they can take it from here. ठीक है? ऐसे ही होता है ना, खासकर वो इलाके जैसे बैंगलोर है, तो बैंगलोर में बारिश वारिश खूब होती है, तो यहाँ ठंड रहती है, तो यहाँ पे ऑफिस में क्या कहते हैं, चाय बना के रख देते हैं। यहाँ पे जो अच्छे ऑफिस होते हैं वहाँ पे चाय वेंडिंग मशीन होती है, आप बस निकाल वो बटन दबाओ और अपने आप चाय बन के आ जाएगी। मगर जो सस्ते ऑफिस होते हैं वहाँ पे ये वाले जुगाड़ होते हैं, ठीक है। तो बैंगलोर में ऑन एन एवरेज the room temperature will be like 20 degrees Celsius. On an average, this is the temperature over there. So कौन बताएगा what will happen now? कौन बताएगा what will happen now? What will happen now? So obviously the chai will start losing heat. High temperature, low temperature, there will be a transfer of thermal energy. So chai will start losing thermal energy. Chai will start losing heat. And when the chai will start losing heat, its temperature will fall down. And obviously, ultimately, the temperature of the chai will reach from 80 degrees Celsius to 20 degrees Celsius. If I wanted to calculate how much is the total heat lost, I would simply say mass of chai into specific heat of chai into initial temperature minus final temperature, which will give me the heat loss. But what is the objective of a flask? What is the objective of thermos flask? As an engineer in Milton Company, so Milton Company is the one which makes lunch boxes. तो मैं जब स्कूल जाता होता था तो मेरे मम्मी जो है ना वो हमेशा मिल्टन के लंच बॉक्स लेके आते होते थे, उसमें खाना जो है गर्म रहता है ना। तो मान लो आप मिल्टन में काम कर रहे हो और ये थर्मस फ्लास्क का डिजाइन कर रहे हो, तो जब आप थर्मस फ्लास्क डिजाइन करोगे उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजाइनिंग द थर्मस फ्लास्क? हाँ गाइस, मेरे पीछे सिर्फ 20 लिखा हुआ है। व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजाइनिंग थर्मस फ्लास्क? The objective of thermos flask will be that the chai should remain hot for a very long period of time. The chai should maintain its temperature for a very long period of time. So heat transfer process, should it be fast or it should be slow? Yes, you guys are right. I know. You guys are saying the temperature of the chai should fall down slowly. So heat transfer process should be slow.
है ना, यही हम चाहेंगे। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो द टेम्परेचर विल फॉल डाउन स्लोली, टेम्परेचर शुड फॉल डाउन स्लोली, so heat transfer is slow. So if the heat transfer is slow, this means the time period of the process will be more. Heat transfer is slow, so time period of the process will be more. Time period of the process will be more. Okay? So when you are designing the thermal flask, what is the most important parameter? When we are designing the flask, the most important parameter is the time period. The most important parameter is the time period. So we will design the flask in such a way, we will design the flask in such a way that time period is maximized. Oh, guys, एक मिनट होल्ड करो, हाँ, time period is maximized. Time period is maximized, है ना? I hope मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है? तो एक काम करते हैं, let's check thermodynamics. In thermodynamics, is there any law which is giving us the time period? Because if we get the formula of time period, we can maximize time period by differentiating. We can check out what are the parameters that are going to maximize the time period. ठीक है ना? आप thermodynamics के laws देख लो, और कोई भी ऐसा लॉ होगा जो आपको टाइम पीरियड बताएगा, हम उसमें चेक कर लेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स हैं जो टाइम पीरियड को अफेक्ट करने वाली हैं। और उन टर्म्स को हम कैसे चेंज करें ताकि टाइम पीरियड मैक्सिमाइज हो जाए, है ना, यही काम है। तो आओ चेक करते हैं। तो आप लोग बताओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या से फॉर एग्जांपल जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Does zeroth law of thermodynamics give you any information about time period? Zeroth law of thermodynamics, is it giving any information about time period? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। जीरोथ लॉ तो सिर्फ थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करता है, वहां पे टाइम पीरियड का तो कुछ मेंशन ही नहीं होता, है ना। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सर, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। So whatever heat is lost by chai, that heat is gained by atmosphere. There is no mention of time over here. Second law of thermodynamics, entropy principle. Every process is irreversible, and during the process, entropy of universe will increase. So when the chai will lose heat, the entropy of chai will decrease, but the atmosphere will gain heat, so entropy of atmosphere will increase. So in overall, the entropy of universe will increase. There is no mention of time. Third law of thermodynamics, Fowler-Guggenheim statement, you may do whatever, you will not achieve a temperature of 0 Kelvin. Here, so there is no need of talking about third law. Because finally in thermal equilibrium, temperature will be same as atmosphere. So none of these laws is talking about time period. So to analyze that time period, we need this subject. So when we are talking of thermodynamics, thermodynamics cannot give you the time period. It is the subject of heat transfer which will help you find out time period. Actually, the subject of heat transfer helps you find out how much is the heat transfer rate. So heat transfer per unit time. एक सेकेंड में जो हीट गया, ठीक है, यानी कि जूल पर सेकेंड, हीट ट्रांसफर रेट जूल पर सेकेंड। एंड हाउ डू यू राइट टोटल हीट? यू राइट टोटल हीट एज जूल। So basically heat transfer rate by, so basically total heat transfer by heat transfer rate, total heat transfer by heat transfer rate will give you the time period, that is second. So basically distance upon speed will give you the time period. गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरा कनेक्शन थोड़ा सा वीक है। क्या कोई फ्लक्चुएशन हो रही है क्या? आर यू गेटिंग लाइक फ्लक्चुएटिंग सिग्नल? हैंग हो रहा है क्या बीच बीच में? क्योंकि मेरा ये जो है ना स्टूडियो पोर्टल, इसमें बीच बीच में एक दो बार बफरिंग हुई है। डू लेट मी नो बेटा, ठीक है।
अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो रेक्टिफाई करेंगे। एक्चुअली होना तो नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास फाइबर नेट है, बट ये ना कभी कभी पीछे से भी कनेक्शन वीक होते हैं, कभी कभी हो जाता है, पर जियो फाइबर नेट है तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, ऑडियो, बेटा आज थोड़ा सा ऑडियो का गड़बड़ है। मतलब आज तो क्या, आई नो ऑडियो का प्रॉब्लम है। अच्छा, ऑडियो, बेटा आज थोड़ा सा ऑडियो का गड़बड़ है। मतलब आज तो क्या, आई नो ऑडियो का प्रॉब्लम है। फैन में ऑफ कर फैन ऑफ करता हूँ, ठीक है। बस ये थोड़े दिन की बात है। अभी वैसे मेरे पास कैश का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास कैश है। मैं लैपटॉप ठीक करवा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टाइम नहीं लग पा रहा। तो लेट्स मूव अ लिटिल अहेड। तो ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। अभी ये रफ में नोट कर लो, फिर फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड आउट द हीट ट्रांसफर रेट इन एनी सिचुएशन, टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ एनी प्रोसेस। In fact, if you have done manufacturing, then you must know about annealing, tempering, quenching, है ना? So suppose we have air, which is at 20 degrees Celsius. We have water, which is at 20 degrees Celsius. There are two examples. In one example, the iron, which is initially at 800 degrees Celsius, cools down in air. In the second example, the iron, which is initially at 800 degrees Celsius, cools down in water. So can you tell me what will be the difference of total heat transfer in the two processes? In the two processes, the total heat transfer will be same or different? ये जो दो प्रोसेस हो रहे हैं, इनमें टोटल हीट ट्रांसफर सेम होगा या डिफरेंट होगा? सर बोलो बोलो। And yet you can assume that the amount of fluid is very large, so fluid temperature will remain constant. Iron temperature will decrease, but the fluid temperature will remain constant. This you can definitely assume. बोलो। गाइस 1 मिनट होल्ड करना। Okay. I hope I'm live. हाँ, so मेरे से गलती से ना क्रोम बंद हो गया था। हाँ, एनीवे, तो मतलब एक्चुअली आई वाज ट्राइंग कि मे बी मैं कुछ बंद कर दूं और इंटरनेट की स्पीड ठीक रहे, बट ऐसा कुछ चल नहीं रहा था, तो मैंने गलती से क्रोम ही बंद कर दिया। मैं भूल गया था कि आई एम ऑन लाइव ऑन यूट्यूब। तो चेक प्लीज। So it will remain the same. बिल्कुल सही है। So Manas is saying, sir, the heat lost by iron will be mc delta T. Sir, initial temperature of iron is 800 degrees Celsius. After thermal equilibrium, the temperature of iron will be 20 degrees Celsius. Sir, initial temperature of iron is 800 degrees Celsius. After thermal equilibrium, the temperature of iron is 20 degrees Celsius. Sir, in both the examples, the heat lost will be same. So if I'm talking of Q, so this is your case 1, this is your case 1, and this is your case 2. So if I'm talking of Q,
Q1 will be equal to Q2 only. But we all of us know that in air, the time period of the process will be more. It will take more time for the iron to get cooled in air. That's why it will become ductile. But in water, it will cool down fast, quenching. That's why it will become brittle. So time period will be more in case of air cooling, gas cooling. Now, how do you write time period? So time period is written as total heat transfer by heat transfer rate. So time period is inversely proportional to heat transfer rate. This means in case 1, the iron is losing heat slowly as compared to case 2. So in the two examples, there is a difference of heat transfer rate. That's why there is a difference of final properties of the iron. So in most of the situations, it is not the total heat transfer, but it is the heat transfer rate or the time period of the process which is more important, which will decide the performance effectiveness of the process. Okay? तो ये दोनों चीजें important है. So total amount of heat transfer से ज़्यादा important हो सकता है time period of heat transfer rate. अब जरा सेकंड ऑब्जेक्टिव देखते हैं. सेकंड ऑब्जेक्टिव भी रफ में देखेंगे. ठीक है. अच्छा, सेकंड एग्जांपल क्या है? सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मान लीजिए, लेट अस सपोज वी हैव टेकन अ कॉपर बेरिंग बॉल. हमने कॉपर का एक बेरिंग बॉल ले लिया. ठीक है. एंड मे बी और इन फैक्ट द लास्ट एग्जांपल ओनली, maybe we have a iron ball which is initially heated to a temperature of 90 degrees Celsius. So entire ball, whether it is point A, whether it is point B, whether it is point C, whether it is point D, this entire ball is at a temperature of 90 degrees Celsius. ठीक है. मेरे पास क्या है? मेरे पास एक आयरन बॉल है. I have heated the iron ball to a temperature of 90 degrees Celsius, and right now entire ball is at a uniform temperature. Everywhere the temperature is same. Now what I will do, I will drop this ball in very large amount of water, and maybe the water is at a temperature of 30 degrees Celsius. ठीक है. The amount of water is very large, so you need not worry about the rising temperature of water. You can assume that the temperature of water is nearly the same. Okay. Now what will happen? So this is the situation initially. This is the situation initially. ठीक है, ये initial situation है. Now I think what you will say, initially point A and B, their temperature is same. So there is no temperature difference between A and B. Point B and C, temperature is same. No temperature difference, no heat transfer. Point C and D, no temperature difference, no heat transfer. But between D and water, there is a temperature difference. So D will start losing heat. So material at point D will start losing heat. So temperature of D will start falling down. So what will happen? After 1 second, this is the situation that we are going to observe. So after 1 second, this is the situation that we are going to observe. So at point D, how much will be the temperature? Maybe 80 degrees Celsius, because D has lost some heat. But A, B, C, they were not losing any heat. So temperature of C, B and A will remain still the same, that is 90. Okay. Now check. So now also between D and water, D for dog. Now also between D and water, there is a temperature difference. So D will lose heat further. The temperature of D will fall down further. But now between C and D also, there is a temperature difference. So C will also start losing heat. So temperature of C will also start falling down. But AB, BC, there is no temperature difference, so no heat exchange. So what will happen? After 1 more second, what I will observe? After 1 more second, I will observe that A and B are still at the same temperature 90, but the temperature of D has fallen down further, and now the temperature of C is also falling down. Again, what you will say, the D will keep on losing heat because it has a temperature different than water. C will also lose heat to D because of temperature difference.
but now B will also start losing heat. So temperature of B will also fall down. So what will happen? After one more second, temperature of B will also fall down, but A will still be at same temperature. So I think now you can write down yourself what will be the condition after further one more second. So after further one more second, now the core will also start losing heat. So temperature of core will also start falling down. है ना? So I think this is what is going to happen in real life. बोलो हाँ या ना? क्या मैंने कुछ गलती की है? This is how the temperature of material is going to change with the time. This is how the temperature of material is going to change with the time. So guys, just hold on. थोड़ी सी ना गर्मी लग रही है और शोर के कारण मैंने फैन स्विच ऑफ कर दिया था. वैसे तो इधर सर्दी नहीं है, बट क्या कहते हैं, तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने पहले वार्मर पहना हुआ था. तो हाँ बेटा, वो ऐसे ही हो रहा है. वो कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी फॉल डाउन हो जाता है, फिर मेरी बीवी रोने लग जाती है. को 2 दिन से थोड़ी तबीयत खराब है. बस अब जिम में फिर से शुरू करते हैं. थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते भी हैं, तो मैंने फिर से सोचा मैथ्स वैथ्स पढ़ने का. तो कल से मैं अपग्रेड का भी काम करूंगा, आप लोगों की क्लासेस भी लूंगा और मैथ्स में फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ. एक बार मेरा मैथ्स ओवर हो जाएगा तो मैं रोबोटिक्स पढ़ूंगा फिर से, और फिर मैं नेवल आर्किटेक्चर के जो सब्जेक्ट्स हैं, मरीन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, एरोस्पेस और एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, वो एक एक करके पढ़ना शुरू करूँगा. क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज में स्टैग्नेंट सा हो गया था, और आजकल एजुकेशन इंडस्ट्री में इतनी चीज़ें चल रही हैं और थोड़ा सा सोशल प्रेशर भी रहता है ना, पीयर प्रेशर भी रहता है फॉर मेकिंग मनी. तो उससे मैं कंफ्यूज होने लग गया था बहुत ज़्यादा. तो मैंने सोचा कि अब आराम से शांति से अपना टीचिंग का पैशन भी फॉलो करना है और बाकी चीज़ें भी पूरी करनी है. तो देखते हैं, करेंगे सब कुछ. चलो फिर. हाँ, नाउ what we learn from this particular example, what is the objective of this particular example? Please check, it's very easy. Suppose you focus on one particular point. Say for example, I focus on point C. I will focus on point C. I hope you can realize that with the time, the temperature of point C is changing with the time. I hope you can realize that with the time, the temperature of point C is changing with the time. So what I can say? I can simply say that temperature is a function of time. है ना? सही है ना? तो आपको याद है ना? At a point, if a property is changing with the time, what do you call it? Convective difference or local change? At a point, property is changing with time. I think we call it as local change. Not only this, you consider a photo. You consider a particular time instant. At this time instant, you can see that different points have different temperature. So temperature is a function of position also. So at the same time, different points have different temperature. So there is a convective difference of temperature. Temperature will be a function of position also. Okay? So generally, during, not always, not necessarily, but generally, the temperature is a function of both position and time. Generally, temperature is a function of both position and time. Okay? There are special cases. Say for example, in certain situations, temperature in the material is not a function of position. Such examples you will call as lump. जैसे थर्मोकपल का जो जंक्शन होता है ना, वो उस कैटेगरी में फॉल करेगा. अगर मेरे पास एक डायमंड हो, छोटा सा डायमंड हो, उसको गर्म करके मैं गोल्ड ज्वेलरी में एम्बेड कर रहा हूँ, वो भी उसी कैटेगरी में फॉल करेगा. कोई बेरिंग बॉल है, उसकी क्वेंचिंग कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो भी उसी कैटेगरी में फॉल करेगा. There can be situation where temperature is not a function of time. Sun right now is operating in such a condition. ठीक है? सॉरी, मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई,
मैंने मिसमैच कर दिया। दो एग्जाम्पल दिए मैंने। आई हैव गिवन टू टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स। In some examples, temperature within the body will not be a function of position. So thermocouple junction, diamond, and what you say, copper bearing ball, those were in that category. And there will be some examples where temperature will not be a function of time. The sun is operating at such a condition. So both possibilities are there. Okay. So this is in general, but not necessary. Now, many times it is important to find this out. Many times it is important to find this out. Why? Because when we say quenching means that the temperature of the object should change very fast with the time. So del T by del time should be high. है ना? Now from where you are going to get this derivative? From this function only. जब आप क्वेंचिंग करते हो, एनीलिंग करते हो, एक्चुअली उसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो वो फंक्शन, वो डेरिवेटिव आपको कहाँ मिलेगा? इसी फंक्शन से मिलेगा। सो इफ यू डू नॉट नो दिस फंक्शन, यू कैन नॉट फाइंड आउट दिस डेरिवेटिव। Sometimes what happens in the material, there are critical points. Say for example, there is an iron rail, and when the train will pass over the rail, so due to friction, heat will be generated. Some of the heat will be absorbed by iron only. Let's say there is a manufacturing defect. So there will be some cracks in the iron rail. Now, how the temperature on these points is changing with the time will decide the stress and strain at these points. And if the stress and strain is beyond the strength, the crack will propagate and ultimately the things will fail. तो समझ रहे हैं आप? तो ये वाली जो टर्म है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये टर्म काफी सारी लाइक क्रिटिकल थिंग्स डिसाइड करती है। फिर दूसरी बात, say for example, there is a body which is made of two layers, and these two layers are held together by the help of a glue. ठीक है? Now this glue has a melting temperature of 160 degrees Celsius. So during operation, I want to calculate what is the temperature of the glue. How much is the temperature at this position? So how will you find out the temperature at this position? With the help of this function. Okay, na? So how much is the temperature at a critical point? How fast the temperature at critical point is changing with the time? So these things will come from this particular function only, temperature field only. And thermodynamics cannot give you the temperature field. This subject will give you the temperature field. So in this particular subject, what are the important things that we are going to find out? We are going to find out the heat transfer rate. Heat transfer rate will help us find out the time period of the process. And yes, it will help us, this subject will help us find out the temperature field also. So these are the objectives of this particular subject. These are the objectives of the subject. Or you can say advantages of heat transfer over thermodynamics. Advantages of heat transfer over thermodynamics. अब believe me, कोई भी क्वेश्चन आने वाला है, आपको इन तीनों में से कोई एक चीज कैलकुलेट करनी होगी. In any of the numericals, you have to calculate one of these three things. बोलो हाँ या ना, समझ आया? Or any doubt is there? Do let me know if this is clear or not, or any sort of doubt is there. Do let me know, then I will move ahead. So ये काम हमने सारा रफ में किया है ना? This all we have done in rough only. No need to worry about this. ये रफ में ही करना था. फेयर नोट्स अभी बनाना शुरू करेंगे. अभी तक तो जो भी करना था वो रफ में ही करना था. फेयर नोट्स अब बनाना शुरू करेंगे. ठीक है. So एक काम करते हैं, 10-15 मिनट और पढ़ लेते हैं. फिर मैं ना आज क्लास बंद करूंगा, क्योंकि एक तो हरिवीर सर भी आए हुए हैं और राघव सर भी आए हुए हैं, और दूसरा ना वैसे बोला भी नहीं जा रहा है, और 9:30 बजे वो क्वेश्चन भी करना है. ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम देना. एंड हम लोग फिर कल से तो स्पीड पकड़ ही लेंगे. कल मतलब अब आपकी नेक्स्ट क्लास जो है फ्राइडे सैटरडे को है. थर्सडे कल को आपकी क्लास नहीं है, क्योंकि कल करवा चौथ है, तो उस टाइम वो चांद वांद आएगा. So if I will take class, then she will become angry, है ना, इसलिए फिर मेरे
मेरे को दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मैं ऐसे ही डांस खाता रहूंगा फिर। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हीट ट्रांसफर इज कंप्लीट। सो लेट्स स्टार्ट विद कंडक्शन। So, modes of heat transfer. First important topic, and this is the point where you start making neat and clean notes. यही पॉइंट है जहां से आपको बिल्कुल साफ सुथरे नोट्स बनाने हैं। मोड्स और मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर। कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय मोड? व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिज्म? कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोड? What is the meaning of mode? What is the meaning of mechanism? What is the meaning of mode? What is the meaning of mechanism? Chitranjan, Manas, beta kuch bhi answer. So देखो, actually this is the law of nature, that if there is a difference of temperature between 2 points, there will be a propagation of heat between the 2 points. ये तो पता है हमें। But बात ऐसी है, when the heat is propagating, how it is propagating? Okay, when the heat is propagating, how it is propagating? What is happening in the high temperature zone or the low temperature zone or the intervening medium and space, which is responsible for propagation of heat? देखो, बहुत सिंपल सी बात है। हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, उनके बीच में हीट तो मूव करेगा। मेरे को एक शहर से दूसरे शहर तक जाना है, ठीक है। मान लो मेरी बहुत अच्छी जॉब लग जाए दूसरे शहर में, तो ड्राइविंग फोर्स क्या होगी? जॉब होगी, है ना। उसी तरह यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस है। तो भैया टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट ट्रांसफर तो होगा। टेम्परेचर डिफरेंस इज द ड्राइविंग फोर्स। बट ऐसा नहीं है ना कि मैं दूसरे शहर बस सोचूंगा और पहुंच जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा। Either I will go by bus or I will go by train. So there will be some mode of transportation. Similarly, definitely high temperature, low temperature, heat will move. But what will be the mode of transportation? What is happening at macro level, molecular level, or subatomic level in the source, receiver, or in the intervening medium and space, which is responsible for motion of थर्मल एनर्जी? उसी को आप मोड बोलते हो। क्या बोलते हो? मोड। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है, सच्ची बताऊं जरूरी नहीं है। मोड का सिंपल मीनिंग है व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, हैपनिंग वेयर, है ना। पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज हैपनिंग, हैपनिंग वेयर, व्हाट इज हैपनिंग इन द सोर्स. So by source I want to say high temperature zone. Think low temperature zone and intervening space or medium. Intervening space or medium. Intervening space or medium. Space or medium. What do you mean by intervening? Intervening मतलब बीच में. So between Earth and Sun there is no medium. There is only space. But outside the wall high temperature, inside the wall low temperature, so intervening medium is concrete, ठीक है। इसलिए so what is happening in source, sink intervening medium or space at कौन से लेवल पर? मैक्रो लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल और सबएटॉमिक लेवल। मॉलिक्यूलर और सबएटॉमिक लेवल और सबएटॉमिक लेवल, subatomic level, that is responsible for level that is responsible for propagation of thermal energy. अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को मेरा वीडियो हटा देना चाहिए, तो जस्ट होल्ड ऑन, आई विल रिमूव माय वीडियो, which is responsible for propagation of thermal energy, propagation of thermal energy from
from high temperature zone to low temperature zone, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। और प्रोपोगेशन ऑफ थर्मल एनर्जी, इसी को आप हीट बोलते हो, है ना। प्रोपोगेशन ऑफ थर्मल एनर्जी को आप हीट बोलते हो। अब दरअसल होता क्या है, अगर मैक्रो एक्टिविटीज हो रही हो तो उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। मैक्रो एक्टिविटीज को आप क्या बोलते हो, कन्वेक्शन। अगर मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज हो रही हो तो उसको आप बोलते हो कंडक्शन, हीट कंडक्शन। और अगर सब एटॉमिक एक्टिविटी हो रही हो तो उसको हम बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। ये मैं अभी सिखा दूंगा, ठीक है। बट आई होप मोड का, मैकेनिज्म का डेफिनेशन समझ आ गया। So all of you please check, is it clear or any sort of doubt is there? Please check. What is the definition of mode? Mode किसे कहते हैं? So if the heat is propagating as a result of macro level activity, here macro means fluid flow, then we will call it as convection. It is because of molecular level activity, we will call it as conduction. And because of subatomic activity, we will call it as thermal radiation. I know you guys might be thinking, what are these activities? What is the difference between these activities? So don't worry, things will be cleared in like some time. So let's focus on molecular level activities first. That is your heat conduction. तो सबसे पहले हम लोग heat conduction की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से from here you get the definition of heat conduction. So अगर किसी को heat conduction की definition लिखनी हो, then what you will say? Heat propagation या heat transfer, the way you like. If you want to write in more simple language, then heat transfer. Propagation थोड़ा heavy word हो जाता है ना। So heat transfer as a result of molecular level activities. But where? This is very important. Where? As a result of molecular level activities in the intervening medium. As a result of molecular level activities in intervening medium. In intervening medium. Intervening medium. देखो मैंने सोर्स नहीं लिखा, सिंक नहीं लिखा, इंटरवीनिंग स्पेस भी नहीं लिखा। I have only written intervening medium. First of all, if there is an intervening space, there will be no molecular activity, so there will be no heat conduction. And it is not the molecular activity of high temperature point or low temperature point. It is the molecular activity of medium between them. So ये चीज बहुत ज्यादा important है। अब आप बोलोगे, what is the meaning of these molecular activities? So first of all, let us write down the name of these activities. So आप लिख सकते हो, there are 4 types of molecular activities. तो कैसे लिखें? एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, molecular activities. Molecular activities, इस तरह से लिख देते हैं, molecular activities. So there are 4 activities. Okay. The first activity which I am going to explain now, that is lattice vibration. Lattice vibration. Lattice vibration. तो अभी एक ही एक्टिविटी समझा रहा हूँ। दरअसल हरियूल सर की भी क्लास कर ली थी बायजू वाली, तो वो बायजू वाली क्लास ले रहे थे और वो कह रहे होते मेरी वेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो जाता हूँ। तो लेटिस वाइब्रेशन एंड देन फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दिस इज द सेकंड एक्टिविटी, फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. Then you have diffusion. Third one is diffusion. And fourth one is intermolecular collision. Diffusion and fourth one is intermolecular collision. Intermolecular collision. Intermolecular collision. ठीक है.
Okay. Now check please. Check what is lattice vibration. आप लोगों ने lattice word सुना हुआ है. कौन बताएगा what is lattice? Who will tell me what is lattice? What is lattice? आप लोगों ने सुना हुआ है. ये लेटस नहीं है. ये बर्गर में लगाने वाली पत्ता गोभी नहीं है. लेटस नहीं है. वो LETTUCE होता है. लेटिस. You have learned this term in material science. कौन बताएगा? Sir, when we talk of a solid, so in a solid substance, the atoms or molecules, especially atoms, they are not free to move, and they are arranged in some pattern. Sometimes the pattern is regular, then we call the substance to be crystalline, and sometimes the pattern is irregular, then we call the substance to be amorphous. तो जैसे डायमंड होता है ना, डायमंड होता है. So in case of diamond, the carbon atoms are arranged in hexagonal form, है ना. इस तरह से अरेंज होता है ना कार्बन एटम. तो ये आपका डायमंड का अरेंजमेंट होता है कार्बन एटम्स का. And this atom will keep on continuing. This pattern will keep on continuing. इस तरह से पैटर्न कंटिन्यू चलता रहेगा. ठीक है. ये 3D अरेंजमेंट होगा इस तरह से. So this is called crystalline material. But graphite is also a form of carbon. In graphite, I think it is graphite only ना. Graphite crystalline होता है या amorphous होता है? एक बार मुझे चेक करने दो. एक बार चेक करने दो. Graphite is crystalline or amorphous? Oh, graphite is also crystalline. Graphite भी crystalline है. So वैसे जो glass होता है ना, so glass is non-crystalline. Glass is amorphous form of silicon dioxide. ठीक है. ये चीज आप ध्यान रख सकते हो. Quartz is crystalline form of silicon dioxide. So there will be a regular pattern of arrangement of molecules. But glass, ये वाला glass, it is amorphous form of silicon dioxide. Okay. So lattice simply means how the atoms are arranged in a substance. Now please note, even though we say that the atoms of a solid are not free to move, but actually the atoms are vibrating at a point. तो कल बताया था ना, when we were talking of this example, तो मैंने बोला था कि इसके जो molecules हैं वो vibrate कर रहे होंगे अपनी position के around, मगर वो जो vibration है उसका amplitude बहुत कम होगा और frequency बहुत high होगी, तो हम उस vibration को feel नहीं कर पा रहे. So suppose if I take an iron block, so definitely there will be crores of lakhs of iron atoms in this small block, and we will say that the atoms are nearly fixed at their position. Why I am saying they are nearly fixed? Because actually there is a vibration which we are definitely not able to feel. But yes, some vibration is definitely there. ठीक है. तो ये जो atoms है ये अपनी positions के about vibrate कर रहे हैं. The distances which I have shown between the atoms, this is definitely a very exaggerated distance. Actually the distance is negligible. बिल्कुल थोड़ा सा space होता है ताकि atoms को move करने का थोड़ा सा मौका मिले. But the space is very less. And when the atoms vibrate, they collide with each other. ठीक है. ये चीज ध्यान रखना. अब मान लो this entire body is at a uniform temperature of 50 degrees Celsius or 30 degrees Celsius. So what we have, this entire body is at a uniform temperature of 30 degrees Celsius. 30 degrees Celsius. ठीक है. So maybe ये सीमेंट की दीवार है, कुछ भी हो सकता है. This can be the wall of cement also. So what will happen? All atoms will vibrate, and latent energy, sensible energy, so kinetic energy, vibrational energy, that is nothing but thermal energy, temperature, है ना? Temperature is the measure of thermal energy. Thermal energy is latent energy plus sensible energy. Sensible energy means kinetic energy, that is vibration. Since everywhere the temperature is same, so these atoms are vibrating with the same energy. These atoms are vibrating with the same energy.
Now suppose two balls with same energy they collide. So will they exchange any energy? अगर दो एटम है जिनका दो बॉल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है और वो आपस में कोलाइड करें, तो क्या वो एनर्जी एक्सचेंज करेंगे? नो. So as of now, when everywhere the temperature is same, the atoms are vibrating and colliding with each other, but they are not exchanging energy. ठीक है, तो ये चीज तो आई होप समझ आती होगी. अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, आपको जो मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में, हो सकता है कि वो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल एग्जैक्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पे काफी सारा एटॉमिक फिजिक्स लगता है, क्वांटम मैकेनिक्स लगता है, केमिस्ट्री भी लगता है. ठीक है, और हम लोग उतने एक्सपर्ट नहीं है कि हम लोग उसको कवर अप कर सकें. ठीक है, बिलीव मी, यहाँ पे ना हीट ट्रांसफर को अगर बिल्कुल डीपली समझना है तो आपको टर्बुलेंस आना चाहिए अच्छे से, आपको क्वांटम मैकेनिक्स आनी चाहिए, एटॉमिक फिजिक्स आनी चाहिए और केमिस्ट्री भी आनी चाहिए. हमें उतनी नॉलेज नहीं है, हम उसको नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन दूंगा ना वो ऐसी एक्सप्लेनेशन होगी जो मतलब आप कह सकते हो कि कॉलेज स्टूडेंट को याद रखने दिलवाने के लिए, कि उसको याद रहे. तो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, वो लेमन एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है. ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना और प्लीज माइंड मत करना. ठीक है, अच्छा, नाउ चेक. नाउ व्हाट वी विल डू, सो मे बी दिस इज द वॉल ऑफ द रूम, maybe this is the wall of the room, but now the sun has come out. Now the sun has come out, and because of heat of the sun, because of heat of the sun, the temperature of outer surface is now 50 degrees Celsius. ये जो दीवार है ना, इसका टेम्परेचर कितना हो गया है, इसके आउटर सरफेस का टेम्परेचर कितना हो गया है, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया है. So outermost layer of atom is at a temperature of 50 degrees. Now, since these atoms are at a temperature of 50 degrees, so they will vibrate with more energy. They are going to vibrate with more energy. But the remaining atoms were at 30 degrees. So high energy, high temperature, low temperature, high energy, low energy. So when high energy ball will collide with the low energy ball, there will be some transfer of energy. So there will be some transfer of energy on collision inward. Now when these low energy balls will gain energy, their temperature will rise. So maybe here the temperature will become 45. Here the temperature will become 45. But still the inner balls are at 30 degrees Celsius temperature. 45 is definitely more than 30 degrees Celsius temperature. So high energy ball, low energy ball. High energy ball, low energy ball. So when the collision will happen, there will be a transfer of energy. Now these atoms will gain energy, so their temperature will also rise up. Their temperature will also rise up. But again, the remaining atoms are at 30 degrees Celsius. Again collision will happen, energy will be absorbed, temperature will rise up. Again collision will happen, energy will be absorbed, temperature will rise up, again collision will happen. So I hope you can realize that when there was no temperature difference, when everywhere the temperature was same, when everywhere the temperature was same, lattice vibration was happening, but there was no propagation of energy. But as soon as we have applied a temperature difference, as soon as we have applied a temperature difference, the same lattice vibration is helping you propagate energy. Now which energy is this? This is the vibrational energy, thermal energy. So thermal energy is propagating from high temperature to low temperature by lattice vibration, that is molecular level activity. So we will call that heat conduction. बोलो हाँ या ना, समझ आया? यहाँ से सबसे पहले तो लैटिस वाइब्रेशन की डेफिनेशन पता लगती है और दूसरा ये पता लगता है कि लैटिस वाइब्रेशन तो हमेशा होता है, चाहे टेम्परेचर सेम हो या ना हो, लैटिस वाइब्रेशन तो हमेशा होता है. मगर लैटिस वाइब्रेशन हीट ट्रांसफर तभी करेगा जब टेम्परेचर डिफरेंस हो. इफ देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस देन हीट ट्रांसफर विल नॉट बी देयर, बट लैटिस वाइब्रेशन विल हैपन. ठीक है, तो ठीक है, दिस इज लैटिस वाइब्रेशन. दिस इज व्हाट लैटिस वाइब्रेशन इज. इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है. ये फिगर भी आपको इसलिए बनवाया है ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको याद आ जाए. ठीक है,
अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो? चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, इसकी अंग्रेजी लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखेंगे? इन एनी सॉलिड सब्सटेंस, ऐसे लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। इन एनी सॉलिड सब्सटेंस, एनी सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस, atoms vibrate about their lattice point. Atoms vibrate about their lattice point. Vibrate about their lattice point. About their lattice point and collide with each other. About their lattice point and collide with each other. Collide with each other. With each other. With each other. In presence of temperature difference, तो एक काम करो, ब्रैकेट में लिख दो लेटिस वाइब्रेशन। इसी को आप लेटिस वाइब्रेशन बोलते हैं। इसको आप क्या बोलते हो? लेटिस वाइब्रेशन बोलते हो। ठीक है, फिर लिखोगे इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। Same temperature difference can be called as gradient also. Why gradient? Difference of temperature between 2 points. So gradient. In presence of temperature difference. So basically it is convective difference. In presence of temperature gradient. Temperature gradient. Same lattice vibration. Same lattice vibration helps in propagation of thermal energy. Same lattice vibration helps in propagation of thermal energy. Thermal energy, and is called as heat conduction. And is called as heat conduction. And is called as heat conduction. Why heat conduction? Thermal energy is moving. Thermal energy means kinetic energy of vibrating atom. Thermal energy is moving, so it is moving because of lattice vibration, which is a molecular level activity. So conduction. But that's it. It's called heat conduction. It's called heat conduction. Now the concept of lattice point is only applicable to solids, because in liquids and gases there is no arrangement of molecules. Right? In liquids and gases the molecules are free to move. So this term is used only for solids and not for liquids and gases. Only for solids, whether metallic solids or non-metallic solids. Only for solids. ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। लेटिस जो टर्म होती है जिसका मतलब है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एट फिक्स्ड पॉइंट, ये टर्म आप सिर्फ सॉलिड्स के लिए यूज करते हो। लिक्विड्स और गैसेस में कोई अरेंजमेंट नहीं होता। मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स आर फ्री टू मूव। ठीक है, so lattice vibration is applicable only for solids. But that's it. ठीक है, आज के लिए बस करते हैं। Tomorrow we will continue with the remaining term, free electron transfer, what you say, diffusion, intermolecular collision. The definition of conduction will become complete. We will write Fourier's law and then thermal conductivity. Tomorrow means day after tomorrow class. कल आपका क्लास नहीं है, डे आफ्टर टुमारो आपका क्लास है। और रोज का 1 घंटा मेरे साथ पढ़ाई, 15-20 मिनट रिवीजन, दैट वुड बी ऑल। इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। तो इन ओवरऑल 60-70 आवर्स में, आपके खुद के 60-70 आवर्स में पूरा हीट ट्रांसफर हो जाना चाहिए। 60-70 नहीं तो 80 आवर्स बन जाएगा। 80 आवर्स का मतलब क्या होगा कि आपके 4-5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। इन 4-5 नंबरों में आपका मैथ्स भी रिवाइज होगा, थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन, थोड़ा सा कैलकुलस, थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स, सारी चीजें रिवाइज होने वाली हैं। तो 80 आवर्स 5 मार्क्स, दैट्स नॉट अ बैड डील, इट्स अ वेरी गुड डील। ठीक है, बहुत बढ़िया है ये। तो मिलते हैं कल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई डाउट पूछना तो पूछ लो। कल मैंने क्या किया था, मैंने नोट्स सेव कर दिए थे, मैंने एक फोल्डर बना दिया है। उस फोल्डर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूंगा और वहां से आप सारे नोट्स डाउनलोड
तो जैसे मैंने यहाँ पे डालना भूल गया था, अब तो वैसे वो फोल्डर बना हुआ है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल सकता था, तो मैं अभी उसको डाल दूंगा। अदरवाइज कल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हो। तो मानस और चित्रंजन, बेटा इफ यू हैव डाउट प्लीज डू आस्क, अदरवाइज आप लोग जा सकते हो, लीव आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी डाउट हो बेटा पूछ लो। आज ना मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, वीडियो तो क्या, जो अपने क्या कहते हैं वीर सिंह साहब है ना मेडिसी वाले, उनका एक शॉर्ट आया हुआ था। तो सच्ची बताऊं, उन्होंने जो बोला था वो बिल्कुल सही है यार, ये तो हमने भी एक्सपीरियंस किया है, मेरे बैच के बहुत सारे फ्रेंड्स ने एक्सपीरियंस किया है। तो कह रहे थे जो बीटेक के लास्ट ईयर होते हैं और जस्ट बीटेक के बाद जो 1-2 साल होते हैं वो कहीं ना कहीं बेंचमार्क बन जाते हैं। जो लोग उन 2 सालों में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वो बहुत सक्सीड करते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं इसमें एक और चीज बोलूंगा, मतलब सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और एक डायरेक्शन में मेहनत करते हैं। जैसे मैं और मेरे फ्रेंड्स थे ना, हम लोग, मैं सच्ची बताऊं, पढ़ते लिखते नहीं थे, कॉलेज अच्छा था हम लोगों का मगर हम पढ़ते लिखते नहीं थे। थर्ड फोर्थ ईयर में भी तफरी मारी, जॉब लग गई, और जॉब में मेहनत बहुत की मगर उसकी ना कोई डायरेक्शन नहीं थी, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं थी, और फिर वो भी छोड़ दी। और छोड़ने के बाद जहाँ तैयारी करनी थी वहाँ भी लपटरबाजी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद हम लोगों को प्रॉब्लम्स हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, मेहनत खूब की मगर प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आई। और वही लोग जिन्होंने बीटेक के लास्ट ईयर में या बीटेक के जस्ट बाद 1 साल में मेहनत कर ली, वो कहीं ना कहीं हमसे आगे निकल गए थे। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो आपके बीटेक का थर्ड ईयर फोर्थ ईयर होता है और बीटेक के जस्ट बाद के जो 1-2 साल होते हैं, इसमें आपको मेहनत करना और एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलना बहुत जरूरी है। और यार आज का जो टाइम है ना वो वैसा नहीं रह गया कि भैया कोई बात नहीं, कॉलेज के बाद देख लेंगे, ड्रॉप मार लेंगे, ये वो। पता है यार, मतलब दुनिया इतनी तेज मूव कर रही है ना और सोशल प्रेशर इतना बढ़ता जा रहा है कि चीजें आसान नहीं है। तो पहले क्या होता था, पहले डिप्लोमा वाला बच्चा ही इंजीनियर बन जाता था, असिस्टेंट इंजीनियर बन जाता था, है ना। फिर एक टाइम आया जब बीटेक का बच्चा असिस्टेंट इंजीनियर बन रहा था। अब टाइम आया है कि बीटेक का बच्चा जूनियर इंजीनियर बन रहा है, तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और रिक्वायरमेंट्स